Good morning, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So we will continue optimality test in transportation problems. And this is the problem which we have discussed in the last lecture. So you see that the solution of this problem using Vogel's approximation method. So yes, these are the allocations using Vogel's approximation method, and we have checked this is for the optimum solution. So method is known as the modified distribution method and the UV method. So first thing is we have allocate U and V by assigning arbitrary value to any U and V. So we have allocate 0 here, and this is obtained using the occupied cells only. So cost is equals to the sum of Ui plus Vj. And after the allocations, we have find out Dij for the unoccupied cells. And in this problem, we have obtained minus 18 here. Dij, one Dij is negative. So the solution is not optimal and we need further improvement here, right? So आगे का इम्प्रूवमेंट इसमें हमें कैसे करना होगा, बिकॉज ऑप्टिमम सॉल्यूशन उसी केस में पॉसिबल होगा जबकि सारे के सारे डीआईजेज हो, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0. तो जो सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर वोगल्स अप्रोक्सीमेशन से आया था, वी हैव ऑब्टेन्ड द कॉस्ट 799 एंड बिकॉज वी माइनस 18 जो यहाँ पर डीआईजे फाइंड आउट हुआ है, इट शोज दैट our cost may be reduced by minus 18 here. So let's see कि further इसमें हम कैसे improvement करेंगे. So you have to remember these 3 points here. First thing is जहाँ पर भी negative हमारे पास dij आया है, उस सेल पर मुझे एक थीटा allocate करना है, right? और थीटा को इस तरीके से allocate करना है, इस तरीके से लूप बनाकर allocate करना है कि जो कॉर्नर्स में जो लूप कंसिस्ट होगा, लूप कंसिस्ट ऑफ स्टार्ट्स एंड एंड्स विद द ऑक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड सेल्स ओनली. सो अनऑक्यूपाइड सेल्स अगर आप देखोगे, क्लोज्ड पाथ जो है माइनस 18 यहाँ पर एलोकेट हुआ है, तो माइनस 18 पर मैंने थीटा एलोकेट करा और थीटा wait a minute.
वाली मैट्रिक्स में जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, दीज आर द एक्चुअल एलोकेशंस यूजिंग द वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड इंक्लूडिंग -18 जहाँ पर नेगेटिव है। तो -18 की जगह हमने जो एलोकेट करा है वो हमने एक थीटा एलोकेट करा है, और ये जो थीटा है, थीटा को इस तरीके से एलोकेट करना है, एलोकेट मैक्सिमम थीटा एज मच एज पॉसिबल बाय क्रिएटिंग द लूप। तो यहाँ पर जो लूप जनरेट कर सकते हैं, सिर्फ यही ओनली पॉसिबिलिटी है लूप जनरेट करने की, क्योंकि जो इसके कॉर्नर एलिमेंट्स हैं लूप के वो ऑक्यूपाइड सेल्स के होने चाहिए। ऑक्यूपाइड सेल्स अगर आप देखोगे तो ऑक्यूपाइड सेल्स मेरे पास 60, 20 और 8 यहाँ से लूप जनरेट है। तो सिर्फ पॉसिबिलिटी या तो लूप बन सकता है 30, 40, 70 और 8 पर। वो इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि 70 अनऑक्यूपाइड है। इस वाली डायरेक्शन में भी लूप नहीं बन सकता है क्योंकि कॉर्नर एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, ऑक्यूपाइड होने चाहिए। तो सिर्फ जो पॉसिबिलिटी है, अगर मैं यहाँ से लूप जनरेट करना स्टार्ट करती हूँ 30 से, तो सिर्फ पॉसिबिलिटी है कि 60, 20 और 8 से ये लूप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं हम। तो हमने यहाँ पर क्या करा, I have written these 3 points here. Closed path starts and ends at the selected unoccupied cells. Every corner element of the loop must be an occupied cell. Corner element occupied होने चाहिए हमेशा, और थीटा को एलोकेट करना है ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव असाइन करके। तो अगर मैंने यहाँ पर प्लस थीटा लिया है, then it in this corner it will be 2 minus theta. थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो रहा है, एंड देन अगेन ऑल्टरनेट यहाँ पर माइनस थीटा था, देन प्लस थीटा हियर, सो tan प्लस थीटा, tan एलोकेशन था ऑलरेडी, एंड इन दिस कॉलम बिकॉज tan प्लस थीटा हुआ है तो ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव लेना है, तो 8 माइनस थीटा यहाँ पर हो जाएगा। तो एलोकेशन किस तरीके से करनी है, स्टार्ट विद द मोस्ट नेगेटिव डीआईजे से हमने एलोकेशन करना स्टार्ट करा, जिसपे हमने प्लस थीटा करा है, और लूप के कॉर्नर एलिमेंट्स पर एलोकेशन हम करते जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ इसी पॉसिबिलिटी का लूप जनरेट हो रहा है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, इस थीटा की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। सो इसको इवैल्यूएट करने के लिए हमें थीटा की मिनिमम वैल्यू लेनी है। मिनिमम वैल्यू सिर्फ इन दोनों में से हो सकती है। अरे ओए माई कौन है? डोमिनोज खाने गए थे, कुछ खिला दे यार। मिनिमम ऑफ 8 माइनस थीटा एंड 2 माइनस थीटा, दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू। तो ये थीटा की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, इट मींस इट शुड बी इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से मिनिमम ऑब्वियसली 2 माइनस थीटा होगी, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 2 हियर। नाउ इस थीटा इक्वल्स टू 2 को मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, सो द माय नेक्स्ट एलोकेशंस विल बी, ये तो जो थी ऑलरेडी जो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन से एलोकेशंस की थी वो तो हमें लेनी ही है। नाउ द चेंजेस आर, जो इस पॉइंट पर थी नेगेटिव -18 जो था, उसकी जगह ये हो जाएगा +2, दिस इज 12 एंड दिस वन इज 6। सो माय नेक्स्ट मैट्रिक्स विल बी इन दिस फॉर्म, ये वाला 0 हो जाएगा, सो नो नीड टू टेक द 0। So this is the next allocation after substituting the value for theta. So the cost will be, this is the cost 5 into 19, 2 into 30, and which is 743. And you see that it's less than, जो पहले हमने वोगल्स अप्रोक्सीमेशन से कॉस्ट निकाली थी, it is less than ₹779, and which must be expected also in the case because 7 हमारी जो cost find out होनी चाहिए थी, it must be less than 799, -18 होना चाहिए था because -18 DIJ वहां पर आया था। So this is actually the you can check our solution is correct here because we have obtained the cost is less than the method जो basic feasible solution obtained हुआ था। Now again we check this solution for the optimality by repeating the above procedure। मतलब कि अब जो मेरे पास फाइनल मैट्रिक्स आई है, दिस इज माय फाइनल मैट्रिक्स, और अब मुझे इस मैट्रिक्स को चेक करना है ऑप्टिमैलिटी के टुवर्ड्स। ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए अगेन मैं इस मैट्रिक्स के लिए ऑब्टेन करूंगी डीआईजे। इफ डीआईजे इज ग्रेटर देन 0 देन सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, इफ इट इज लेस देन 0 देन not optimal।
means further improvement is required in that case, and if it's equals to 0 then alternate solution exists. So the same procedure has to be applied in this matrix. Alternate solution exists. Now consider, जैसे कि अभी हमने पहले सेम उसी मेथड को अडेप्ट करना है. यहाँ पर जो करा था हमने पहले जो सॉल्यूशन था वो मेरे पास ये था. उसके बाद मैंने इस सॉल्यूशन को टेस्ट करा था ऑप्टिमैलिटी के लिए, बट ये ऑप्टिमम नहीं आया था बिकॉज यहाँ पे -18 आ गया था. अब इसको रिमूव करने के लिए हमने ये 2-3 स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करे हैं. एक हमने क्लोज लूप जनरेट करा है बाय allocate alternate theta to the adding and subtracting theta in the rows and the columns, and it must be allocated in such a way that corner element of the loop must be in the occupied cell. तो हमने यहाँ पर थीटा की वैल्यू इवैल्यूएट करी. नाउ दिस इज द फाइनल मैट्रिक्स which we are going to check for the optimality test. तो optimality test के लिए मुझे क्या निकालना होगा? Again same Cij for unoccupied cells and Ui plus Bj for the unoccupied cells. तो ये जो मैं मैट्रिक्स नेक्स्ट लिख रही हूँ यहाँ पर, दिस इज माय Cij मैट्रिक्स फॉर अनऑक्युपाइड सेल्स. यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टोटल ये वाले 6 पॉइंट्स मेरे पास अनऑक्युपाइड है यहाँ पर, तो उनके लिए हमने यहाँ पर कॉस्ट लिख लिया. नाउ Ui एंड Vj फॉर द एम्प्टी सेल्स. तो Ui एंड Vj को फाइंड आउट करने का मेथड है कि किसी भी एक Ui को आर्बिट्रेरी वैल्यू असाइन कर देनी है. ठीक है, आर्बिट्रेरी हम उसको वैल्यू असाइन करेंगे. सो आर्बिट्रेरी जनरली हम 0 ले लेते हैं, ऑल्दो यू कैन टेक एनी ऑफ द वैल्यू. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सपोज इसको 0 लिया है, सपोज ये 0 लिया है, एंड सिर्फ ऑक्यूपाइड सेल्स देखनी है. तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? Cij इज इक्वल्स टू Ui प्लस Vj. नाउ U3 इज 0 and C34 is, this is C34. C34 is equals to U3 plus V4. C34 की वैल्यू मेरे पास 20 है and U3 is 0, so V4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? What will be the value of V4? It's 20. Is it clear? जैसे सेम पहले करा था वही चीज हम कर रहे हैं यहाँ पर. एक को 0 कंसिडर करके सिर्फ उनकी हेल्प से जो कि ऑक्यूपाइड सेल्स हैं उसकी हेल्प से हम Ui एंड Vj इवैल्यूएट कर रहे हैं. सो दिस इज अगेन 10 एंड दिस वन इज 20. तो ये वाली वैल्यू कितनी बचेगी मेरे पास? दिस इज -10 बिकॉज C14 इज इक्वल्स टू U1 प्लस V4. C14 10 है, U1 मेरे को इवैल्यूएट करना है और V4 मेरे को पता चल गया 20 है. U1 की वैल्यू यहाँ से आ गई मेरे पास -10. इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर? प्लीज लेट मी नो, इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Now next cost is 40 here and अभी हम ये वाला इवैल्यूएट नहीं कर सकते क्योंकि ना तो हमें U2 पता है ना हमें V3 पता है. Now we can evaluate V2 because this is 8 and 0, तो ये हमारे पास होगी 8. ठीक है, अब इसकी हेल्प से 8 30 and 8, so it's equal to 22. 22 plus 8 is 30. Now we have 40 and 22, so this is 18. In the same way 19 and 10, so it's equals to कितना हो जाएगा ये? 29. So these are the Ui and Vj's for the
occupied cells. Now evaluate for unoccupied cell. Unoccupied cell मेरे पास सिर्फ यहाँ पर है, इसी पॉइंट्स पे मुझे इनका सम इवेल्युएट करना है एंड 70 पर और 60 पर. तो यहाँ पर जो इसका सम होगा इट्स 8 minus 10, so it's -2. This one is 10 minus 10. This is no, it's this is 18. 0 1 18. 18. So 18 and 22. 18 and minus 10. This is 8. Sum of 29 and 22. So it's 51. 29 and 0, it is 29. And 18, 0, this one is 18. And this one is 22 and 20. So it's 42. So this is the matrix for UI plus Vj for empty cells here. Now find out the Dij's, and Dij is the difference between Cij and Ui plus Vj. Dij is equals to Cij minus Ui plus Vj. So just find out the difference. 30 minus of -2, this is 32, and this is 50 minus 8 is 42. 70 minus 51 is 90. 40 29 हो गया हमारे पास 11, and 70 minus 18, this is 52, and this one is 60 minus 42 is 18. So you see that all the Dij's here are greater than 0. So solution is optimal with minimum cost ₹743. So this is the complete solution using modified distribution method, जहाँ पर हमने चेक करा है कि जो solution था वो optimal था या नहीं था. Is that clear? अगर यहाँ पर again कोई Dij हमारे पास negative आ जाता, then we adapt the same procedure by allocating theta, alternative allocate theta to the unoccupied cells, and then evaluating again check. इसी procedure को हमें वापस से apply करना पड़ेगा. So this is a problem. This is completed here, and now we can take a problem, take a case of the degeneracy case. एक और यहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट होती है degeneracy की. Degeneracy का मतलब है कि ये जो हमने allocations की थी यहाँ पर ऑप्टिमैलिटी टेस्ट के लिए मैंने आपको बताया था जो allocations होती हैं वो टोटल नंबर ऑफ allocations होनी चाहिए m plus n minus 1, m plus n minus 1, m rows and columns. तो इस वाली प्रॉब्लम में हमारे पास 3 rows थी, 4 columns थे, -1 मीन्स 6 allocations होनी चाहिए थी. 6 है, you see that 1 2 3 4 5 6. इसीलिए हमने इसको ऑप्टिमैलिटी टेस्ट के लिए अप्लाई किया था. बट कभी कभी क्या होता है जब हम allocations करते हैं तो allocations एग्जैक्ट ये नहीं होती, allocations may be less than m plus n minus 1. तो ऐसे वाले केस को बोलते हैं degeneracy केस. ऑप्टिमैलिटी टेस्ट के लिए सबसे पहले हम उसकी डिजेनरेसी को रिमूव करते हैं, और डिजेनरेसी को रिमूव करने के लिए किसी भी एक सेल में हम एक एलोकेशन कर देते हैं विच इज वेरी स्मॉल, या तो इसको डिनोट करते हैं डेल और एप्सिलॉन से. ठीक है, तो सपोज मेरे पास टोटल यहाँ पर एलोकेशंस होती, सपोज 5 होती, तो 5 मीन्स द केस ऑफ द डिजेनरेसी अराइज हियर. तो मैं किसी एक सेल पर स्मॉल एक डेल्टा क्वांटिटी को एलोकेट कर देती एंड देन सॉल्व द प्रॉब्लम. Is that clear? So that is the case for the degeneracy case. Is that clear? Method is
modified distribution method. Is this clear or any doubt? Clear है मैम. आगे कंटिन्यू करें. Yes मैम. So next is the degeneracy problem. Degeneracy in the transportation problem. It means when number of occupied cells is less than m plus n minus 1. This is the case of degeneracy. And note down the point. To resolve the degeneracy, allocate an extremely small amount, which is denoted by del or epsilon, to one or more empty cells. जितनी भी, इट मे बी पॉसिबल कि मुझे 2 की रिक्वायरमेंट पड़े या मुझे 1 की ही रिक्वायरमेंट पड़े, तो जितनी की भी रिक्वायरमेंट होगी उतनी सेल्स पर मुझे डेल को एलोकेट करना है. सो in order to resolve the degeneracy, to one or more empty cell, so that number of occupied cells becomes कितनी occupied cells हो जाए मेरे पास m plus n minus 1, and then solve the same method, solve using the same method. तो एक प्रॉब्लम हम डिजेनरेसी की सॉल्व करके देखते हैं कि इसको कैसे करना है. जैसे सपोज ये मेरे को यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम गिवन है एंड इक्वल्स टू 8 3 11 7 8 3 3 9 5. Also the availability and the requirements are given here. So it's 50, 80, 80, 60, 70, 80. A, B, C and X, Y, Z. So first thing is solve the problem using any of the method. I'm saying that अगर given नहीं है then go for the Vogel's approximation method. तो Vogel's approximation method से हम इसको solve करेंगे, which is also known as the penalty method. I hope it's clear. Vogel's approximation से हम कैसे solve करेंगे इसको? Find out the penalties. Penalty means the difference between the lowest and the second lowest entry, and then allocate accordingly. तो जब हम इस प्रॉब्लम को Vogel's approximation से solve करेंगे, you just try to solve it yourself. मैं लिख रही हूँ, उससे solve करने के बाद क्या आएगा. 8 3 11 7 8 and 3 3 9 5 and इसके बाद जो allocations यहाँ पर होंगी, this is 50 80 60 and 20. 50 80 80 60 70 80. एक्चुअल में एलोकेशंस कितनी होनी चाहिए यहाँ पर? m plus n minus 1. 3 rows 3 columns minus 1. We have we required 5 allocations here, but you see that using Vogel's approximation method सिर्फ 4 allocations यहाँ पर हुई हैं. ठीक है, तो इसको मुझे रिजॉल्व करने के लिए, दिस इज द केस ऑफ डिजेनरेसी,
इसको रिजॉल्व करने के लिए मुझे कहीं पर एक डेल और एक एप्सिलॉन को ऐड करना होगा, ठीक है। तो आप कहीं पर भी ऐड कर सकते हो। सपोज मैंने डेल को यहाँ पर ऐड करा है इन द प्रॉब्लम, एक स्मॉल क्वांटिटी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। उसके बाद अब मैं चेक करूंगी कि यार क्या इसका सॉल्यूशन ऑप्टिमम है कि नहीं है। तो अगेन द सेम थिंग, कॉस्ट निकालनी है मुझे फॉर अनऑक्यूपाइड सेल, कॉस्ट इज द गिवन एंड यूआई एंड बीजे फॉर द ऑक्यूपाइड सेल्स। तो हमने क्या करा है यहाँ पर, जस्ट राइट इट डाउन। Here m plus n minus 1 is equals to 4. So add delta to one of those empty cells which make possible the determination of unique set of ui and vj. So next matrix पे, in the next matrix I am allocating delta $50 तो यहाँ पर एलोकेट हुआ है, 3 कॉस्ट है, 80 एलोकेट हुआ है, 3 कॉस्ट है, डेल मैंने एलोकेट कर दिया इस वाले सेल पर, 5 कॉस्ट है, 20 एलोकेशन, 9 इज द कॉस्ट and 60 allocate here, 3 is the cost. Now ui and vj evaluate करना है। ui and vj evaluate करने के लिए सिर्फ हमें कॉस्ट जहां पर एलोकेशंस होती है उन्हीं कॉस्ट को यूज करना होता है। तो ui and vj by assigning any value 0 to this one, so cost is equals to यहाँ पर 3 है, ui कितना हो जाएगा इसी में देख लो, यहाँ पर ui vj, यहाँ पर अगर मैंने 0 रखा है तो दिस वन इज 5 बिकॉज 5 and 0, सो ये 5 हो जाएगी, 9 and 5 दिस इज 4, 3 5, दिस वन इज -2 एंड दिस इज 3 कॉस्ट इधर है, तो दिस इज 3 and 3 and 4, so this one is -1. So this is the matrix for ui and vj. Now write down the cost matrix. Write down the cost matrix for non-empty cells, for empty cells, unoccupied cells. Cij for unoccupied cells. Unoccupied means जहाँ पे allocations नहीं हुई है, तो वहाँ की cost हमें लिखनी है from the matrix, given matrix. So it's 8, सिर्फ इस पॉइंट्स की, इन 4 पॉइंट्स की cost लिखनी है, 7 and 8, 11. It's given in the problem. In the same way, find out ui plus vj matrix for ui plus vj for empty cells और unoccupied cells, कुछ भी बोल सकते हो। तो इन चारों पर सम देख लो, ui vj का कितना है। इसके लिए जो ui vj का सम है इट्स -3, इस पॉइंट के लिए जो सम है 3 - 2, it's 1. For this point 4 plus 3 is 7 and -1 plus 0, it's -1.
Find out the Dij. Dij is the difference. Dij is equals to Cij minus Ui plus Vj. So 8 minus 3 is 11. 7 minus 1 is 6. This is 8 minus 7 is 1. And 11 minus 1 is 12. So you see that since all the Dij's are greater than 0, so solution is optimal here. It's completed here. So this is the case for the degeneracy, जहाँ पर कि हमारी allocations जो होती हैं वो m plus n minus 1 से कम होती हैं. तो उस केस में मैं एक, अगर ये suppose 3 allocations होती, यहाँ पर 4 allocate हुआ था, अगर 3 होती तो मैं यहाँ पर 2 allocations करती, because I required actually 5 allocations here. Because 4 allocations आई तो मैंने एक ही point पर allocation किया है. Allocation इस तरीके से करना है कि आप ui और vj को easily evaluate कर सकते हो. You can, although you can allocate at any point. Is it clear? Is it clear? Any problem or it's clear? Please write down your attendance. इसके बाद इसमें नेक्स्ट एक और टाइप की प्रॉब्लम आती है, विच इज द अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. बैलेंस्ड का मतलब है कि डेस्टिनेशन में जितनी रिक्वायरमेंट है उस वो इक्वल टू उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है. ठीक है, सप्लाई कैपेसिटी और रिक्वायरमेंट दोनों इक्वल है, बट समटाइम्स द डिमांड मे नॉट मोर देन द अवेलेबिलिटी. ठीक है, तो ऐसे केस में जब डिमांड और सप्लाई में डिफरेंस हो जाता है तो हम एक डमी डेस्टिनेशन और सोर्स will be added in the transportation problem to make it a balanced. Dummy का मतलब है अगर कॉलम में रिक्वायरमेंट है then add the dummy column that includes the zero cost over there. उसको ऐड कर देंगे जैसे कि असाइनमेंट प्रॉब्लम में किया था. और उसके बाद हम सबसे पहले उस अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम को बैलेंस्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे एंड देन वी सॉल्व इट. जैसे एक मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर अनबैलेंस्ड का लेकर बता देती हूँ, उसको आप अपने आप से सॉल्व करके देख लेना. तो अनबैलेंस्ड में जैसे unbalanced transportation problem means ये दे रखा है मेरे को 4 5 6 2 4 5. This is F1 F2
F3, M1, M2, 3, 5, 4, 2, 2, 7, 6, 1, 3. So it's 8, 12, 40. Sum is, इसका आप sum देखोगे तो कितना हो गया? This is 20, 34. And this one is 4, 4, 6, 8, 8. और इसका जो sum है हमारे पास 30 है total. ठीक है? This is my requirement and this is availability. इसका सम आप देखोगे 30 है. इट मीन्स यहाँ पर जो मेरा अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट है वो वेरी कर रहा है. तो इस प्रॉब्लम को, दिस इज द अनबैलेंस्ड टाइप प्रॉब्लम, तो मुझे यहाँ पर कितने की रिक्वायरमेंट और होगी? कितने की रिक्वायरमेंट और होगी यहाँ पर? कितने की रिक्वायरमेंट और होगी इसको बैलेंस्ड में कन्वर्ट करने के लिए? बताओ. कितनी रिक्वायरमेंट और होगी? Am I audible to you? वॉइस आ रही है मेरी? My voice is clear. No response. Your response is too delayed. तो यहाँ पर इसको अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम को बैलेंस्ड में कन्वर्ट करने के लिए वी रिक्वायर्ड वन डमी कॉलम हियर. एंड डमी कॉलम के लिए हम जो कॉस्ट लेंगे, दिस इज 0, 0, 0 and 4 must be there. Now you see that the requirement and availability are same here. So this is the unbalanced problem which is now converted into the balanced transportation problem. So first thing is converting the unbalanced into the balanced and then use the appropriate method. So solve the problem using Vogel's approximation method. इसको अब आप solve करो and find out the transportation cost. Then check the problem for optimality. Then check for optimality. Optimality के लिए वही UV method हमें apply करना है. Check for optimality. So it's your practice problem. So you just try to solve this problem. And transportation problem is completed here. In the next class, हम जो start करेंगे, we will start statistics part, right? Unit first. Till then, आपको जो भी problem हो, you can discuss and try to solve as many as problem, maximum number of problems. Okay.